the welcome by starting ceremony. I request our respected principal sir and the organizers to kindly come forward on the stage and present the sapling to our esteemed guests as a token of welcome. To kindly praise the stage and light the ceremonial lamp along with the organizers. I invite the principal sir to deliver the welcome address. A very good morning to one and all present here. At the outset, on behalf of entire GMN College, I wish to extend a hearty welcome to Shri Dr. Balwinder Singh Sood from Punjab University, Patiala, who has a wealth of experience in IPR, I think almost 3 decades in IPR. It's very hard to find such personality who is having such an exclusive experience. I again wish to welcome Dr. Rahul Taneja, who is a mentor for GMN College when we talk about IPR and other related terms. He has always supported like anything to the college as and when needed, and we are motivated and the students are motivated to see your support. We wish to thank the Haryana State Council of Science, Innovation and Technology also for supporting us with a grant of 20,000 rupees to organize this awareness workshop. आपके शहर में 4 बीकानेर हैं, कौन सा बीकानेर सही है? हवेली रेस्टोरेंट सुना होगा आपने। पहले हवेली के नाम से रेस्टोरेंट नियर बाय करनाल था, फिर उसके बाद मन्नत हवेली, फिर कितनी हवेली बनती चली गई। अब कौन सी हवेली ओरिजिनल है? तो बिस्लेरी, बिल्लेरी, आपने देखा बोतल का डिजाइन सेम है, तो कौन से वाला आप प्रोडक्ट सही समझेंगे? तो कोई तो लोगो बनाया होगा ना दुकान के बाहर, XYZ कंपनी लिमिटेड या कुछ भी बनाया होगा। तो आज अपने माँ बाप से जाके पूछिएगा, ब्रदर से जाके पूछिएगा कि whether they have protected their logo, whether they have protected their trademark, वो प्रोटेक्टेड करा है। अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो उसको तो कोई भी यूज कर लेगा, वो आपका प्रोडक्ट नहीं है ना। ये GMN कॉलेज का लोगो है, ये GMN कॉलेज का लोगो है, पर ये भी IPR प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। इसलिए हम इसकी प्रोसेस में जा रहे हैं कि हम अपना लोगो प्रोटेक्ट करें और आज के बाद जो है हमारा लोगो कोई यूज न कर सके। तो इस तरह की कुछ बातें आपको इस वर्कशॉप में देखने को मिलेंगी। I humbly request Dr. Rahul Taneja to kindly come on the podium and share your valuable insights with us. Some are painter, some are designer, some are musicians, some are technocrats. We can protect everything. ह्यूमन मस्तिष्क के द्वारा सोची गई हर एक चीज को हम IPR से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। आपके पास आपकी प्रॉपर्टी होती है, आपके पास कई राइट्स होते हैं, आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स होता है कि कोई मर्जी व्यक्ति आपके मर्जी के बिना उसे बेच नहीं सकता है। यू आर फाइलिंग ए पेटेंट एप्लीकेशन। वैसे तो ये थ्योरी है, थ्योरी ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल पेटेंट ग्रांट नहीं होते हैं, बट जब आप पेटेंट फाइल करें, आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए आता है, तो उसके लिए आपको स्कोप ऑफ द इन्वेंशन वाइडर करना चाहिए। नैरो करोगे तो आपका स्कोप वहीं तक रह जाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या करती हैं, इसीलिए मल्टीपल यूजेस क्लेम करती है। हालांकि यूजेस के बेसिस पे पेटेंट ग्रांट नहीं होता, लेकिन स्टिल वो अपने स्कोप ऑफ द इन्वेंशन को वाइड रखती है ताकि कॉपी ना हो सके। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो किसी ह्यूमन काइंड के लिए यूज होना चाहिए, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। अब ऐसे कौन से कोई नई प्रोडक्ट है तो उसका पेटेंट करवाना। ऐसे ही अगर कोई नया IC बनाता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, उसके लिए अलग से लॉ है हमारे पास, और प्लांट्स के लिए अलग से लॉ है, नया प्लांट्स बनाते हैं। ऐसे ही है कि GI है, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। कई बार क्या होता है, किसी एरिया के कुछ प्रोडक्ट्स फेमस हो जाते हैं, जैसे कुल्लू शॉल है, बीकानेरी गुजिया है, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे।
तो उसको भी रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन जो जीआई है ये इंडिविजुअल आईपी नहीं है, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है जो उस एरिया के नाम पे रजिस्टर्ड होता है। जैसे कुल्लू शॉल है, पूरे कुल्लू के नाम पे होगा, कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं इसको अपने नाम पे कर सकता। लेकिन जो बनाएंगे वो अपने आप को ऑथराइज्ड यूजर जो रजिस्टर करेंगे, लेकिन इस पे नहीं करेंगे। ट्रेड सीक्रेट के बारे में त्रिजा जी ने बता दिया। अब एक प्रोडक्ट में जैसे सर ने बताया था भी आपके मोबाइल फोन में सारे आईपी आ जाते हैं, ऐसे ही एक पेन आप देखो, एक कंपनी का पेन दूसरी कंपनी के साथ कभी नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अलग अलग तरह से उसको प्रोटेक्ट किया है। एक पेन में सारे आईपी आ जाते हैं। Research and Innovation organized by Gandhi Memorial National College, Ambala. The workshop was organized by the IPR cell in collaboration with the Research and Development Committee under the aegis of IQAC with the kind sponsorship of Haryana State Council of Science, Innovation and Technology, Panchkula, convener and other worthy faculty members. This warm gesture reflected the college's deep respect and gratitude towards our esteemed dignitaries. The ceremony continued with the traditional lamp lighting by the dignitaries, symbolizing the spread of knowledge, innovation and enlightenment. This was followed by the welcome address delivered by our respected principal, Dr. Rohita. He extended a warm welcome to our respected resource persons, Dr. Rahul Taneja and Dr. Balwinder Singh Sooj, faculty members and students. He emphasized the institution's strong commitment to fostering a vibrant research culture and expressed heartfelt gratitude to the Haryana State Council of Science, Innovation and Technology, Panchkula, for their generous sponsorship that made this workshop possible. We extend our sincere thanks to Principal Dr. Rohita for his visionary leadership, constant support and encouragement that played a pivotal role in the successful organization of this workshop. The workshop then moved to the technical sessions. Session 1 was delivered by Dr. Rahul Taneja, Scientist, Directorate of Science and Technology, Government of Haryana. He discussed various intellectual property protection methods such as patent filing, branding, trademark, copyright, industrial design and trade secrets. He also guided participants on practical strategies to protect and commercialize their research work. Session 2 presentation. Now I request Dr. Pandey to present memento to Dr. Rahul Taneja as a token of love and appreciation. Our sincere gratitude to Haryana State Council of Science, Innovation and Technology, Panchkula for sponsoring the workshop. Your support made it possible to bring together experts, faculty and students on a common platform. We are deeply indebted to our distinguished resource persons for their insightful sessions. Dr. Rahul Taneja, Scientist, TST, Government of Haryana. Thank you, sir, for your demystifying IPR and its role in research. We also thank Dr. Balwinder Singh Sooj, Professor and IPR Chair, Department of Biotechnology and Food Technology, Punjab University, Patiala, for sharing your expertise. Your knowledge and time has added an immense value to the workshop, sir. We express heartfelt thanks to the Principal, Dr. Rohita, for his constant encouragement, vision and support. A special word of appreciation for the organizing committee, mass communication team, student and staff members whose efforts kept the session running smoothly.